Hello everyone, I Deepthi welcome you all on the YouTube channel of Genius Public Inter College. In today's session, I'll discuss the syllabus that has been reduced by the CBSE. So take out your NCERT book and mark the topics which has been deleted along with me. Okay, if we talk in chapter 1, just come to page number 15, open page number 15. In this, the representation of real numbers on the number line, this topic जो हम लोग मैग्निफिकेशन मेथड से रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते थे, this has been reduced. This topic has been eliminated from the syllabus of 2020-21. So now you don't have to study this topic. It means the exercise 1.4 is completely removed. आपको exercise 1.4 अब solve नहीं करनी है. Fine. From chapter 1 you have to study rest of the thing except exercise 1.4. that was nothing but your successive magnification. Okay, next coming to page number 35. On page number 35, if you remember, we have learned remainder theorem and factor theorem. हमने remainder theorem और factor theorem पढ़ी थी. So now you have to solve the question which are based on remainder theorem, but no need to study the proof of remainder theorem. आपको remainder theorem का proof नहीं पढ़ना है and आपको factor theorem का proof भी नहीं पढ़ना है, which is on page number 39. पेज नंबर 39 पर आपका रिमाइंडर थ्योरम है एंड ऑन पेज नंबर 35 देयर इज रिमाइंडर थ्योरम. You have to study the questions which are based on this theorem, but there is no need to study the proof of the theorem. And one more important thing which has been removed from this chapter is, if you remember your last identity which was very long. अगर आप अपनी लास्ट आइडेंटिटी रिमेंबर करते हो, जस्ट कम टू पेज नंबर 48. आइडेंटिटी नंबर 48 पे आपका जो आइडेंटिटी नंबर ये 8 दिया हुआ था. नाउ यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व अभी नहीं करने हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विच क्वेश्चंस यू हैव टू रिमूव, देन from exercise 2.5, question number 11, question number 12, question number 13 and question number 14. These 4 questions were based on this identity. So now there is no need to solve all these 4 questions. So from chapter 1 you have to remove exercise 1.4, that was your magnification problems, and in chapter 2 you have to remove the proof of remainder theorem and factor theorem. Along with that, there is no need to study this identity and the questions based on this identity. Next, coming to chapter number 3, that is your coordinate geometry. It's a very small chapter which we are studying right now. coordinate geometry आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं. सो देयर इज़ नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर. ये चैप्टर आपका पूरा एज इट इज़ पढ़ना है. देयर इज़ नो डिलीशन. सो नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ योर linear equation. So in linear equation also there is like no such big deletion. ऐसा कुछ बड़ा deletion नहीं है इसमें. A small topic has been removed. It is mentioned that the questions which are based on the applications of ratio and proportion, that portion has been removed, but according to me there is nothing much important related with that topic. So just do one thing, study the chapter number 4 completely. Chapter number 4 भी आप क्या कर लो, completely पढ़ लो. Then your chapter number 5, that was your Euclid symmetry. पहले भी इससे पहले भी सिलेबस में था, तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था. एंड स्टिल नाउ इन द एकेडमिक सेशन ऑफ 2020-21 दिस चैप्टर हैज़ बिन रिड्यूस्ड कम्प्लीटली. इस चैप्टर को क्या कर दिया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है. Even in 10th standard also the theorem which is Euclid's division lemma is has also been removed. तो वो भी आपको नहीं पढ़ना, 10th में भी आपको नहीं पढ़ना होगा. एंड देर इज़ नो सच टॉपिक रिलेटेड विद दिस चैप्टर इन 11th and 12th स्टैंडर्ड. सो दिस चैप्टर नंबर 5, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री, दिस इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड. ये कम्प्लीटली क्या कर दिया गया है, हटा गया है. नेक्स्ट कमिंग टू ज्योमेट्री पार्ट, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स. आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स. There is no such topic which is deleted from this chapter, so you have to study this chapter
completely. आपको ये चैप्टर क्या करना है, पूरी तरह से पढ़ना है. Now coming to chapter number 7. From chapter number 7 very small topics are removed. पूरा चैप्टर नहीं हटा है या फिर कुछ एक्सरसाइजेस नहीं हटी हैं. There are some small topics which has been reduced. So coming to page number 115. Page number 115 पर we were having a theorem called as angle side angle congruency rule. ये थ्योरम जो थी, ये थ्योरम क्या हो गई है, अभी आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है. नाउ यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, बट देयर इज़ नो नीड टू स्टडी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. आपको इस थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ना है, बट द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस थ्योरम वो आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट वन मोर टॉपिक विच हैज़ बिन डिलीटेड इज़ इनइक्वालिटी. जो आपका इनइक्वालिटी टॉपिक था उससे रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज थी. स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता था, वो टॉपिक डिफ़िकल्ट भी लगता था. दैट टॉपिक हैज़ बीन रिड्यूस्ड कम्प्लीटली. सो कमिंग टू पेज नंबर 129, दिस टॉपिक inequalities in a triangle, this topic has been deleted. So next your exercise 7.4 was completely based on this topic. आपका exercise 7.4 क्या था, पूरा इसी टॉपिक पे बेस्ड था. सो नाउ from 7th chapter you have to delete exercise 7.4. So in 7th chapter first one was your angle side angle. The proof of that theorem is removed. You have to study the questions based on that theorem, but there is no need to study the proof. And one more, that is your inequality. So the exercise which is based on inequality is your exercise 7.4. You have to remove this exercise completely. आपको 7.4 क्या करना है, completely remove कर देना है. Coming to chapter number 8, that is quadrilaterals. आपका जो quadrilaterals है ये chapter as it is पूरा है. There is no such deletion. इसमें कुछ भी deletion नहीं है. So you have to study this chapter completely. आपको ये chapter क्या करना है, पूरी तरह से ही पढ़ना पड़ेगा. Then from chapter number 9 is related with areas. Chapter number आपका 9 जो है. So good news for you is this chapter has been removed completely. ये chapter आपका पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है. So chapter number 5 that was your Euclid's geometry and chapter number 9 that is your area of parallelograms and triangle has been reduced completely. इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है सिलेबस से. There is no need to study these two chapters. Now coming to chapter number 10, that is your circles. So just listen carefully. Circles से कुछ छोटे छोटे topics हटाए गए हैं. We'll see what those topics are. Okay, coming to page number 175. 175 पेज नंबर ओपन कर लो. पेज नंबर 175 पर we have one theorem 10.5. There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. Now you don't have to study the proof of this theorem. आपको इस theorem का proof अब नहीं पढ़ना है. Just delete this thing. Just mark cross on this theorem. आपको अब ये theorem नहीं पढ़ना है, ठीक है. And this example number 1, these constructions were also based on this theorem. ये constructions भी इसी theorems पे based थे. So according to me अब आपको ये constructions भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है. ये कंस्ट्रक्शंस भी क्या थे आपके, इसी थ्योरम पर बेस्ड थे. सो आपको ये भी नहीं करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिलीटेड फ्रॉम सर्कल्स चैप्टर इज ओके. कम टू पेज नंबर 181. पेज नंबर 181 पर आओ. थ्योरम नंबर 10.10. सी इट्स ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो. थ्योरम नंबर 10.5 एंड थ्योरम नंबर 10.10 बोथ द थ्योरम्स आर डिलीटेड. दोनों थ्योरम्स ही क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं. द थ्योरम वाज इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle. This was the concept of concyclic quadrilaterals. concyclic quadrilaterals का concept था. Now this theorem has been removed. theorem आपकी हट गई है. So from chapter number 10 that is your circles, theorem number 10.5 and theorem number 10.10 both the theorems has been deleted. दोनों ही theorems क्या कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर that is your chapter number 11 construction.
कंस्ट्रक्शन वैसे भी इट वॉज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड फ्रॉम दिस अ वेरी स्मॉल टॉपिक हैज़ बिन डिलीटेड, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शंस विच आर बेस्ड ऑन पैरामीटर पे जो बेस्ड कंस्ट्रक्शन था, बेस एंगल्स दिए रहते थे, दैट हैज़ बिन डिलीटेड. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम 11.2, यू हैव टू रिमूव क्वेश्चन नंबर 5. आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से हटा देना. नाउ देर इज़ नो नीड टू कंस्ट्रक्ट सच काइंड्स ऑफ ट्रायंगल. इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करने हैं. और इससे रिलेटेड और देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस. आपको जो एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन किया है, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमूव. एंड दिस कंस्ट्रक्शन 11.6, आपको यही कॉन्सेप्ट 11.6 कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन किया गया था. सो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू रिमूव फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. कंस्ट्रक्शन 11.6, एग्जाम्पल 1 and question number 5. Okay, coming to next chapter number 12, that is your Heron's formula. In Heron's formula the questions which were based on triangles पे जितने भी questions based थे अभी भी हैं. So आपको triangles पे based जितने भी questions हैं वो आपको पढ़ने हैं. But the questions which are based on quadrilaters that has been removed. quadrilaters पे based questions जो थे वो क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए हैं. Okay, coming to page number, just open page number 203. This topic, applications of Heron's formula, finding areas of quadrilateral. This topic has been removed. So if I talk in short, you don't have to solve exercise 12.2. आपको अब ये 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है. सिर्फ 12th चैप्टर में आपको 12.1 ही सॉल्व करना है. ओके, कमिंग टू चैप्टर नंबर 13. इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड यू हैव टू स्टडी इट कम्प्लीटली. और अच्छी तरह से आपको इसको पढ़ना है. चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. देयर इज़ नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर से कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है. कमिंग टू पेज नंबर 14, कमिंग टू चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14 अगर हम लोग देखें, सो चैप्टर नंबर 14 में भी okay, open page number 249. In this now you have to study from statistics, you have to study only questions which are based on bar graph. सिर्फ bar graph पर जो questions based हैं वही आपको solve करना है. The questions which are based on histogram and frequency polygon, now there is no need to solve the questions which are based on histogram. Just check out on page number 40 to 49, histogram is given. And next is frequency polygon. आपको जो frequency polygon पे based questions थे वो भी अब आपको solve नहीं करने हैं. So from the exercise from this exercise you have to solve the questions which are based on bar graph. There is no need to solve the questions which are based on histogram and frequency polygon. histogram और frequency polygon पे जो based आपके questions थे वो अब आपको solve नहीं करने हैं. Now the questions which are based on central tendencies, now this has been also removed from your syllabus. आपके जो questions central tendency पे based थे वो भी पूरी तरह से हटा दिए गए हैं. It means mean, median, mode के आपके जो questions थे वो आपको solve नहीं करने हैं. So exercise 14.3, एक्सरसाइज 14.3 में आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ बार ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन सेंट्रल टेंडेंसीज हैज़ बिन रिमूव्ड कम्प्लीटली. सेंट्रल टेंडेंसीज के सारे क्वेश्चंस आपके रिमूव कर देंगे. इसका मतलब इस पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज ही आपको हटा देनी है, आपको नहीं पढ़नी है. सो एक्सरसाइज 14.4 हैज़ बिन रिमूव कम्प्लीटली. 14.4 आपको अब पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सेंट्रल टेंडेंसीज. ये पूरे क्वेश्चंस आपके किस पर बेस्ड हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड पे बेस्ड हैं. अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट लास्ट वन इज़ योर प्रोबेबिलिटी. सो यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर कम्प्लीटली. आपको ये चैप्टर क्या करना है, पूरी तरह से पढ़ना है. देयर इज़ नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो एज इट इज़ हैं, देयर इज़ नो डिलीशन फ्रॉम दैट चैप्टर. And from few chapters few topics are removed. So just mark all these things so that you must be aware before preparing for exams that what is going to come in your exam and what you have to delete it.
एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको क्या पढ़ना है, क्या डिलीट करना है, वो आपको पता होना चाहिए. सो मार्क ऑल दीज थिंग्स इन योर टेक्स्ट बुक सो दैट पढ़ते टाइम आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. ओके देन, थैंक यू. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन.